बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सिस्टर्स, इंफॉर्मेटिव वर्ल्ड में वेलकम। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे फ्यूचर परफेक्ट के इंट्रोगेटिव सेंटेंस की एंड किस तरह से वो सवालिया जुमला बनेगा और कैसे आप लोग जो है इसको अप्लाई करेंगे विद द फॉर्मूला वेरी इजी। जैसे कि हमारा फ्यूचर परफेक्ट का नेगेटिव था कि हमने विल और हैव के बीच में नॉट लगा दिया था, राइट। अब हम बात करेंगे इंट्रोगेटिव यानी कि सवालिया की, कि इसको हम सवालिया में किस तरह से कन्वर्ट करेंगे। नाउ स्टार्ट। पहले हम इसका लिख लेते हैं फॉर्मूला। will, then subject, then have, then third form of verb, then object, and in the end question mark. इसकी एग्जाम्पल स्टार्ट करते हैं हम। नंबर 1, she will have invited you. This is the normal affirmative sentence, right? इसको हमने बनाना है affirmative में यानी कि सवालिया में। क्या बताया मैंने कि will स्टार्ट में आएगा, then आपने subject and then have, then object, verb and object and question mark। तो इसका क्या बनेगा? सिंपली will, then she have invited you and in the end question mark। इसको हम उर्दू में कैसे होगा कि इसका जो अफर्मेटिव हो गया she will have invited you, वो तुम्हें बुला चुकी होगी, राइट। अब इसका हम क्वेश्चन मार्क बनाने के लिए क्वेश्चन कर रहे हैं हमसे, तो कि will she have invited you, क्या वो तुम्हें बुला चुकी होगी, ठीक है। क्या उसने तुम्हें बुला लिया होगा, सेम हो चुकी होगी, होगा। सो will she have invited you, right। Next example, number 2. Okay, I will have called you. This is the affirmative sentence, right? So what we will make interrogative sentence? Will I have called you? In the end, question mark. Third one example. She will have cooked me. She will have cooked me. इसका interrogative, will she have cooked me? In the end, question mark. She will have cooked meal. Interrogative, will she have cooked meal? Now, the fourth one. Okay. I will have felt bad. I will felt bad. Will I have felt bad? In the last question mark. Will I have felt bad? In the last question mark. They will have helped him. They will have helped him. Interrogative, will they have helped him? Will they have helped him? In the last question mark. क्या हो रहा है इसमें? सिंपली
ये विल स्टार्ट में आ रहा है, देन सब्जेक्ट है, देन हैव है, देन थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है, एंड देन ऑब्जेक्ट है, एंड द क्वेश्चन मार्क है। सिर्फ आपने सिंपली विल को स्टार्ट में ला के एंड देन आपने सिंपली फॉर्मूले को अप्लाई करना है, एंड द लास्ट क्वेश्चन मार्क लेना है, तो ये आपका अफर्मेटिव से इंट्रोगेटिव आ जाएगा, यानी कि सवालिया की तरफ हो जाएगा। हम इसके एक और बना लेते हैं, ठीक है ना। ओके, आई विल हैव सेंड हर मैसेज। आई विल हैव सेंड हर मैसेज, क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन में आ जाइए। क्वेश्चन जो सेंटेंस होगा वो क्या होगा, विल आई हैव सेंड हर मैसेज, इन द लास्ट क्वेश्चन मार्क। नाउ द लास्ट वन सेंटेंस हम और बना लेते हैं, फिर इसकी प्रैक्टिस आप खुद कीजिए, जो कि सिंपली आपको पता है कि अब तो बहुत हम आगे माशाल्लाह टेंसेस कर चुके हैं। ये आपको सेम वही करना है कि आपने अफर्मेटिव उठाने हैं फ्यूचर परफेक्ट के, राइट, और उसको आपने बनाना है इंट्रोगेटिव में। ठीक, इंट्रोगेटिव में उठाने के लिए आपने पहले माइंड मेकिंग कर लिया कि मैंने उर्दू में इसको कैसा ले सकता है, इसके बाद आपने उसका जो है वो इंट्रोगेटिव बनाया, राइट। ओके, नाउ द वन मोर सेंटेंस विच वी मेक राइट नाउ। ओके, she will have cleaned house. She will have cleaned house. इसका interrogative, will she have cleaned house, in the last question mark. सो ये था हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस जिसका फॉर्मूला मैंने आपको बताया, ठीक है। और वेरी सिंपल, वेरी इजी। जिस तरह से नेगेटिव में है कि आपने विल और हैव के बीच में नॉट लगाना है और वो आपका नेगेटिव हो जाएगा, इसी तरह बिल्कुल सिंपली आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस है कि इसमें आपने विल को स्टार्ट में लाना है, एंड देन सब्जेक्ट है, फिर हैव है, फिर थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है, एंड ऑब्जेक्ट एंड द लास्ट जो है वो क्वेश्चन मार्क है। बिल्कुल सेम आपका जो है वो फॉर्मूला आपका अप्लाई होगा, और ये आपका हो जाएगा फ्यूचर परफेक्ट से, अफर्मेटिव से आपका इंट्रोगेटिव। सो अब जो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे वो हमारा प्रैक्टिस सेशन होगा, जिसमें हम फ्यूचर परफेक्ट का अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव की प्रैक्टिस हम करेंगे फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग द टेंस, राइट। सो आई होप कि आपको लेक्चर समझ में आया होगा, और अगर लेक्चर समझ में आ रहे हैं तो उसको ज़रूर प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। सो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।